When IIM Ahmedabad does something, it definitely has to make news. And this time, what they've done, while it might seem small, कि हाँ selection criteria में change करा है, required percentiles increase कर दी हैं. While it might seem small, there is an impact to that, and this impact is not only limited to IIM Ahmedabad, might also be an impact which might happen at IIM Bangalore and Calcutta. I'll explain what exactly do I mean. In this video, I'll be taking you through what are the three things you need to know. First thing, what I'll share with you, obviously, is that, my dear friends, what are the changes in the cutoffs? Not only in that, there are changes in the gender diversity points as well. What this means for you and whom does it impact? What are the effects of it? And then the fourth thing, which I have not specified on the screen, is that what are the cascading effects of this? Because इसके cascading effects भी हैं जो मैंने अभी कहा है, बहुत important है ये. If you don't know me yet, I am Darpan Saxena, an MBA graduate from IIM Udaipur. I have been the MBA product head at Career Launcher. I am the founder of Creatum, and I help MBA students create fulfilling careers without depending on placements. Now, without further ado, if you've already seen it somewhere, heard it, you know it already, then I'll quickly run you through it, because changes समझना बहुत मुश्किल नहीं है, but उसका impact समझना आपके लिए कुछ है भी या नहीं है, वो थोड़ा ज़्यादा important है. Let's first understand what are the changes. Now here is the thing. अगर आप एक general या EWS कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, तो पहले आपकी ओवरऑल मिनिमम कैट परसेंटाइल which was required for you to be eligible for IIM Ahmedabad admission was 80 percentile overall. Now that has been increased to 95 percentile. That's that. And it was required that in each of the three sections, which is QA, DILR and VARC, you should score at least 70 percentile. Now that minimum requirement is 85. Simply put, ये समझ आ गया होगा आपको कि पहले आपको कम से कम सेक्शंस में 70 परसेंटाइल लानी होती थी, ओवरऑल 80 लानी थी. अब आपको सेक्शंस में 85 लानी है एंड ओवरऑल आपको 95 लानी है. दिस इज अ बिग डिफरेंस. आई विल एक्सप्लेन आगे इसका क्या है impact. Same thing, there is an update for almost, in fact for all categories which you have in front of you in your screen. You can take a screenshot of this and you can see it. Now I will not go so much into it. What I will actually do is that I will go to IIM Ahmedabad's website and I'll show it to you there, because there probably it will be much easier for you to actually understand this. Here we are on the IIM Ahmedabad's website. Now as you can see, I have already explained to you the first row, that if you're a general or EWS, then now your overall percentile you need to get 95 and sectionals you need to get 85. If you are physically disabled, which is the PWD category, then these are the required percentiles for you. And there has been a change for all categories across. That is the first thing which you need to know. The second change which has happened, which I will speak side by side together इसके साथ ही, वो ये है that there has been an increase in the gender diversity point. So females earlier used to get 2 points, which is here. Now they would get 3. 1 point has been increased over here. अब इसका impact क्या है? सीधी सी बात है, आपको पहले without showing the screens and so many things, I'll simply understand, you can simply understand what is the impact of this. One thing is clear that यार okay, मेहनत तो करनी है ज़्यादा ही, because जो पहले अगर मैं 70 परसेंटाइल सेक्शनल ले आता या ले आती, मैं एटलीस्ट एलिजिबल हो जाता. और ऑब्वियसली अगर मेरा अकेडमिक कैटेगरी जो AC होता है इनके यहाँ पे, AC1 AC2 अप टिल AC6, इफ आई एम अ नॉन इंजीनियर, तो मेरे लिए काम बहुत आसान था, क्योंकि मैं अगर कम भी परसेंटाइल ले आऊँ और अगर मैं फीमेल भी हूँ, मेरे लिए एडमिशन ईजियर है एट अ लोअर परसेंटाइल. वन थिंग विच यू कैन क्लियरली अंडरस्टैंड इज दैट अब वो लोअर परसेंटाइल पे एडमिशन इज नॉट सिंपल, बिकॉज नाउ द परसेंटाइल्स यू नीड टू स्कोर आर हायर. सो आई विल गो बैक टू द माइंड मैप एंड एक्सप्लेन टू यू व्हाट इज इन इट फॉर यू. द सेकंड पॉइंट इज दिस, भाई सीधी सी चीज है जो अब आप प्रिपेयर कर रहे हो, बिकॉज ये वीडियो इज प्राइमरली फॉर दोज हु आर गेटिंग इनटू द बी स्कूल्स. दिस इज नॉट जस्ट अ न्यूज दिस थिंग कि देखो ये हो गया है चेंज. नो, आई एम सपोज टू हेल्प यू आउट. यू कैन नॉट अफोर्ड टू हैव वीक सेक्शंस, बिकॉज 85 परसेंटाइल अगर कम से कम आपको लानी है, एंड ऑब्वियसली फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस इन दिस वीडियो आई एम एड्रेसिंग not only the general category students but all category students, but I will take examples of general category students because their percentiles are the highest which you need to get. So भैया सीधी सी चीज है, now you cannot afford to have weak sections, because अगर आपको 85 percentile CAT के pressured environment में लाना है, वो section अब आपका weak नहीं है, it's now
now no longer कि हाँ 75 भी ले आएंगे तो चल जाएगा, because obviously what you need to actually understand is that while you think अरे IMA ने इतना ज्यादा increase कर दिया and all of those things, नहीं, but भाई why are you forgetting that IMB and IMC का already criteria was not so low. So if you see this, I'm right now on the website of IIM Bangalore and you will see that section wise the criteria was 80, 75 and 75 and overall aggregate was 85. Abhi it is still lower than IMA. IMA's is highest, and if you go to IMC's site then you will see that again the overall percentile which you need to score is 85 over here, and the sectionals are also in front of you. VRC it is 80, 80 and 75. Now it just simply means, and I reiterate the point, that भाई अब अगर ABC ड्रीम है and obviously A तो फिर है ही है for sure, weak sections afford नहीं कर सकते। अब second चीज भी जो आपके सामने स्क्रीन पे थी वो ये है that category students now have to up their game like nobody's business, as simple as that. If you are a serious category student, एक तो होता है कि यार I always say that within the category students there are two kind of students. One is category beneficiaries and one is category by chance. ये जो पहले किस्म के लोग होते हैं category beneficiaries, they are the ones who know कि okay we have an unfair advantage एंड ओके हमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कम भी पढ़ लें तो भी अगर इतने तक भी अगर हो जाएगी अगर तो हो जाएगा काम। एंड द सेकंड वन इज दे आर हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स, दे आर ब्रिलियंट पीपल, दे नो कि यार फॉरगेट कैटेगरी, मार्क्स लाने यार, बिकॉज मार्क्स लाने हैं, बस ये बात है, दैट वी हैव टू गिव इट आवर बेस्ट। दे जस्ट हैपन टू बी एन SC ST OBC। नाउ बोथ ऑफ दोज काइंड ऑब्वियसली यू कैन नॉट सिट बैक एंड यू कैन थिंक कि सब ठीक है सब हो जाएगा। अब मैं थर्ड पॉइंट पे भी फटाफट आ जाता हूँ, विच इज है कि अलग अलग पर्सोनास पे इसका क्या है इम्पैक्ट, किसको इसका फायदा है, बिकॉज फायदा भी यहाँ पे है। फायदा किसको है? फायदा क्लियरली यहाँ पे फीमेल स्टूडेंट्स को है, एंड फीमेल नॉन इंजीनियर स्टूडेंट्स को तो है ही है। फीमेल्स को यूं है भाई, सीधी सी चीज है, योर जेंडर डाइवर्सिटी स्कोर्स हैव इंक्रीज एंड दे विल हैव वन बिग इम्पैक्ट। इट्स नॉट जस्ट कि हाँ सर बट 2 स्कोर से 3 तो हुआ है, कितना फर्क पड़ेगा। नो, फाइनल स्कोरिंग में पॉइंट का हिसाब होता है। दिस इज अ बिग चेंज फॉर यू, इट विल हेल्प यू। नॉट सो ग्रेट फॉर द स्टूडेंट्स हु वर अर्लियर इन नॉन इंजीनियर्स वन बट दे वर मेल्स, एंड उनको लगता था यार अब कम परसेंटाइल पे काम हो जाएगा। सो इफ यू आर अ नॉन इंजीनियर एंड मेल, नॉट सो गुड फॉर यू बिकॉज नाउ you have to score higher. So okay, wait, I would not even say that it is not so this thing for you. Nahi yaar, if suppose anything which is if there is anything which inspires you to score higher yaar, that is good news for you. अगर ये न्यूज ये वीडियो के बाद तुम्हें समझ आता है कि नहीं यार हमारा काम है कि अब मार्क्स लाने हैं, और आई थिंक इट इज ग्रेट न्यूज फॉर यू। सो व्हाइल आई हैव स्टेटेड कि तुम्हारे अच्छी चीज नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है। एंड द सेकंड थिंग इज ऑब्वियसली एज आई हैव सेड, रिजर्वेशन, SC ST OBCs and all of those, you have to work harder. अब A तो मिलेगा नहीं, B and C तो मिल जाएगा। नो इफेक्ट फॉर हु, एंड यू नो द आंसर, नो इफेक्ट फॉर मी बिकॉज आई एम दैट, विच इज व्हाट, आई एम अ जनरल इंजीनियर मेल। कोई फर्क नहीं पड़ रहा मुझे, बिकॉज मुझे मालूम था मेरा वैसे भी IIM अहमदाबाद में मुझे 99.99999 समथिंग लाइक दैट लाके ही हो पाएगा। दैट इज व्हेन आई नो दैट ओके मे बी कॉल आ जाए, सो यू स्टिल हैव टू स्कोर दैट मच। वो अगर नीचे से स्लैब उन्होंने यहाँ से यहाँ ले आए हैं, उसका कोई फायदा है नहीं, क्योंकि मुझे तो ऑलरेडी इस लेवल पे ऑपरेट करना ही है, वरना मेरा कुछ होगा नहीं। These are the 3 things. Now one more thing which I want to speak on this is that there is always a cascading effect, and before I speak about that, because you are an aspirant who's watching this, my dear friends, you need to now know, and that is also the first cascading effect of this. इससे जो ripple effect होगा वो क्या होगा? पहली चीज है कि भैया अब IIM अहमदाबाद अगर आप जाने की सोच रहे हो, अब वहां पे टॉप टियर बच्चे आने वाले, the breed, the kind, the quality of students which you'll encounter in this coming intake is gonna be definitely one level above the last batch. Why? Because obviously percentiles are higher, that's that. So while profiles need to be good and everything, because obviously IIM Ahmedabad among ABC is one of those who also very closely evaluates your profiles, very closely. So now these are better crop of students. It's gonna be a competitive environment from day one, like it always is, which means what you need to prepare well. One help which I can do, and this is a serious thing, is that I have prepared a pre-MBA program. It's called How to Be School. This is important because this is a very comprehensive program which takes you through everything, that what you should do immediately from after your competitive exams, your CAT-ZAT, what you need to do in your MBA, and what you need to prepare from now so that you do well in your
academics, I will share with you a few things in this. How should you choose, what specialization should you do, marketing, finance, operations, what all things, how do you build your CV, how do you balance your life and your studies during MBA, what all should you do to work on your extra curricular activities so that eventually your CV is good. If you see this, there are courses inside this. One is a very important one, MBA specialization selector. Why, my dear friends, I need to see you for this. I don't want you to walk into a B school not knowing मुझे करना क्या है, because अगर वो पता नहीं आप अभी से अपनी प्रोफाइल बिल्ड करोगे कैसे, that's a big problem. And the second thing which I want to show you is that there is also a course called MBA Concepts Crashers. क्योंकि भैया आप देख लो, आप समझ जाओ, यहाँ पे ये जो स्टूडेंट्स आएंगे ये आएंगे academically बहुत strong. एक MBA प्रोग्राम में there are different kind of things which happen, which is accounts, economics, stats, operations, finance. अगर ये समझ नहीं आया तो आप पीछे रह जाएंगे, you feel frustrated. In this course I have created summaries of all of these things, statistics, operations, finance. So this is something which you should experience. This is important. One cascading effect is this, that now the IIM Ahmedabad batch is going to get competitive. That is one. Second, which also means that now your placements might happen faster, because again if you talk to placecomers at any of these institutes and you check with them कि last तक में कौन रह जाता है, you will know what that answer is. I will not state that answer openly, but I think you can know that what are the kind of students, who are those kind or category or group of students who get left behind. Not left behind, they get, see, everyone gets placed at these ABCs of the world, but last में placecom को किसको थोड़ी fight हो जाती है कि यार ये place नहीं हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रही है, वो है, तो वो अब थोड़ा कम हो जाएगा, एटलीस्ट एट ए. सेकेंड थिंग इज माय डियर फ्रेंड्स, बैंगलोर और कलकत्ता पे इसका क्या इम्पैक्ट है, थोड़ा इम्पैक्ट है. वो ये है कि अब जो कैटेगरी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बैंगलोर और कलकत्ता में भी एंटर होना शायद मुश्किल हो सकता है, शायद. वाई? Understand it like this, because now the waitlist movement for category students at Bangalore and Calcutta is likely to be lesser than what it was in the last few years. I repeat, SC, ST, OBC और category students की waitlist movement शायद Bangalore और Calcutta में कम हो जाए, even at IIMLs of the world. Because why? आप सोचो क्यों? सिंपल सा है आंसर. Because अब जो वो वाला स्टूडेंट था, कैटेगरी स्टूडेंट, जो कि एक सर्टेन परसेंटाइल पे लास्ट ईयर तक IIM अहमदाबाद के लिए था एलिजिबल, वो आज IIM अहमदाबाद के लिए नहीं है एलिजिबल, वो सिर्फ शायद बैंगलोर और कलकत्ता के लिए एलिजिबल है. सडनली अब जब उसके पास IIM अहमदाबाद का कॉल नहीं होगा, फाइनल ऑफर नहीं होगा और सिर्फ बैंगलोर या सी का ही ऑफर होगा, वो बैंगलोर और सी के ऑफर को छोड़ेगा ही नहीं. वरना हर साल कि मेरे पास यार IIM ए का भी ऑफर है, IIM जो बी है उसका भी ऑफर है, आई एम गोइंग टू IIM ए, तो थोड़ा बहुत एटलीस्ट वहां से ये लोग जो थे, दे यूज्ड टू गो फ्रॉम देयर टू देयर आल्सो. नाउ दैट वुड नॉट हैपन, बिकॉज वो कम हो जाएगा वहां पे दोज काइंड ऑफ स्टूडेंट्स. दिस इज समथिंग व्हिच आई डू एक्सपेक्ट. वन मोर वीडियो आई वाज वाचिंग ऑन दिस एंड somebody spoke about the impact of ISB's 2-year program on this, and I think he made a very valid statement there कि once you have a solid entrant like ISB introducing their 2-year program. So if you watched my previous video wherein I have done the ranking of top 40 and उधर बड़ी controversy हुई थी कि ये जो top 4 B schools हैं इसमें गलत ranking है, ये है वो है. Now you'll understand a few things in that you know, when suddenly a B school like ISB enters this 2-year space, it enters directly at one of those top 4 spots. It does not enter at your 5th or 6th spot. It is already a big B school and everything is going good for them and everything. It enters at a top 4 spot. Now suddenly you have more options. Now suddenly each of these B schools, the top 4, A, B, C and your ISB, would want to retain the best of the talent with them. They would want to get more selective. तो उसका भी कुछ है impact. If you want to know more about these things, you have something specific to ask me, you can join my free Telegram group, or if you want to speak to me one-on-one, go there and find the link to my Topmate account. It is in the description and we can talk, we can chat about this, but more importantly about your CAT prep. I'll see you in the next video. Thanks a lot and goodbye.